are you? Fine, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. How are you? Good evening, Fine, sir. sir. Looking forward to meet you, Arun, sir, soon. Sir, surely, sir, in Chennai. Thank you, sir. Yes, sir. Okay. So, I think when we were discussing about this Paytm, na, 1 or 2 days back, anybody remembers? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So, I was on my phone and I was trying to give you addressable market size. So anybody try to check the addressable market size? Because just thought we can pick up the same company and try and get a sense of how do we value it. Because maybe my calculations were wrong. I don't know because I didn't have any computer at my disposal at that time. So did anybody try? Nobody tried? Hello? No, If you're sir. not if you're I not was going not to try, aware of this. No, sir. if you're not going to try, then how the hell you going to learn? Mm-hmm. You were discussing a company, and if you're not going to try everything, if I only have to do, then how you going to go learn? धनंजय जी ने तो ट्राई किया होगा क्यों धनंजय जी सर हाँ सर क्या बोल रहे हो सर? पेटीएम का कैलकुलेशन ट्राई किया होगा नहीं किया था सर, मेरा फाइबर बोला था ना कि कट गया, तो मेरे पास कनेक्टिविटी का इशू हो गया था, इसीलिए नहीं कर पाया। आज सही हुआ है सर, मैं देखता हूँ। So he says his TAM in India is expected to be $650 billion in FY23. Merchant payments only, cards plus UPI, having a CAGR growth of 41% since FY17. And it is forecasted Indian payment TAM to grow at the rate of 23% by FY22 to FY2030 to reach to a value of 2.3 trillion. So if you were trying to value this business and आप लोगों ने इसको ट्राई किया नहीं किया I don't know. If I take a fresh page and write over here 2.3 trillion. So how much is 2.3 trillion when you make it into crores? Please calculate. How much is 2.3 trillion into crores? सर 2,30,000 करोड़ डॉलर है भैया डॉलर है। हाँ रुपीज नहीं है डॉलर है 1,70,200 billion rupees 74 Sure. रुपीस के हिसाब से। मैंने सही किया मैंने गलत किया सही है सर। सही है and then we said we are expecting a 40% market share. So 40% of this is 7682000 and then he has 1.99% fees 1.99 2% ही पकड़ो so his TAM is 1,53,640 तो हमारा जो फॉर्मूला था TAM into M share into profit margin into वो multiple is equal to your value तो ये जो नंबर है इसके अंदर ये दोनों चीजें हो गई कवर so this is these many crores so what is profit margin now
What is profit margin? What is the profit margin this guy is getting? Is he getting any profits? Is he getting any profits? कोई तो बोलो यार, इतने लेजी हो जाओगे तो मैं कैसे करूँगा? नहीं नो सर। सर। Will he get profits going ahead? यस सर। How much? अभी तो बता नहीं सकते सर। एक चलो, hypothetically, what I'll do is I'll take a 5% profit, or I'll take a 3% profit. Around 4609 into say 10 multiple, 46,000 crores market cap. Today market cap is what? 28,000 crores. अगर ये कहानी ऐसे चलती है तो. Now the thing is, will he be having a 40% market share? आज उसका कितना market share है? Today he has got 50% market share. Will he be having a 40%? The market is assuming that ये lending वेंडिंग business तो चलो हम बाद में देखते हैं. Market is assuming that now if the market cap is 27,000 crores, so that means this guy is even not having 40% market share. He might be having say 30% market share. So try and calculate on 30% market share. What do you get? तो जिस हिसाब से मार्केट इसको अभी वैल्यू कर रहा है. Can you try with the same numbers? यस सर। Please do. मैंने तो कर लिया. प्लीज डू. मेरे को मत इंतजार करो, आप लोग करो. सर 34 से 35,000 करोड़। स्क्रीन भी देख लो सर. 20% का। स्क्रीन भी देख लो जो आप बोल रहे हो. कोई कर रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ सिर्फ? मजा नहीं आता ना यार उसे. Is anybody trying to do? 11,333 सर। सर 11,000 से 12,000। ये सिनेरियोस निकल के आ रहे हैं. अभी मार्केट इसको क्या वैल्यू दे रहा है? मार्केट गिव इट अ वैल्यू ऑफ 28,000 crores. The market says that this company will be having market share somewhere between 20 to 30%. अभी इसका मार्केट शेयर मर्चेंट पेमेंट का 50% है. वी आर गिविंग जीरो वैल्यू टू द लेंडिंग बिजनेस. अगर हम इसमें लेंडिंग बिजनेस का कुछ भी वैल्यू देते हैं, सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप ऑफ मोर देन 30% मार्केट शेयर. ठीक है. कितने लोगों ने पेटीएम बंद कर दिया यूज करना ये न्यूज आने के बाद? मैं तो अभी भी यूज कर रहा हूँ सर, कल भी टोल पे पेटीएम ही यूज हो रहा है। हम्म. तो अगर आप अभी भी यूज कर रहे हो, यू आर अ कॉमन मैन, मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो हमको लगता है कि 30% मार्केट शेयर गिरेगा जिस हिसाब से मार्केट इसको वैल्यू दे रहा है. समवेयर नियर मैंने 20%, समवेयर नियर 20%. So if I take this somewhere near 20% and if I take this 23,000 crores of market cap, so 23,000 divided by 27,900 gives me around 82% value from here into 438.
गिव मी अ प्राइस ऑफ 360 रुपीज। मेरा जो बैंड आपको मैंने दिया है, माई बैंड इज 380 to 500। So if it's a 20% market share, stock price should be around 360 bucks, around somewhere around this level. So this is a sense of valuation. Now the thing is, do we feel that the market cap will go down by 30%? Market share will go down by 30%? ये सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? बोलो बोलो। I've just taken the merchant payment. यूपीआई यूपीआई से तो पैसा इसको आता नहीं, जो मर्चेंट पेमेंट से पैसा इसको ये ट्रांजेक्शन कराता है, उसको इसको 2% फीस मिलता है, बाकी का 30% जो होता है वो उसमें चला जाता है टैक्सेस में। By 2026, retail lending is expected to be $1 trillion US, and MSME lending is expected to be 600 billion. Sources across such traditional financial products, India's growth opportunity created by this is market in India stood at 3 trillion, yeah, the 2 trillion, they focus on 6%. ये तो पागलपंती वाले ग्रोथ का नंबर है, इतना भी ग्रोथ नहीं करेगा यार 65%। सो कहाँ होना चाहिए पेटीएम? दिस इज योर आंसर। One is this method. Yesterday, One is this method. Let me give you something else. One is this method, and the other method is your to value startup company. This is a startup company where operating margins are at a loss. Gross margins आपके थोड़े से भी अच्छे होने लगे। See gross margins 26, 67 का अगर मैं this we have a 9% gross margin. The gross margin has started expanding. Can you calculate the gross margins over here? 2667 into 9%, around 240 crores of gross margin. And this is what? 27% gross margin. So 3892 into 27. 1050 crores of gross margins. So I'll write over here. ग्रॉस मार्जिन मेरा यहाँ पर है 240 करोड़, यहाँ पर है 1050 करोड़, यहाँ पे कितना है कौन बताएगा? यहाँ पे कितना है? Almost 3,000 crore. Yes, almost 3000 करोड़. So this is the trend of the gross margin. तो कंपनी इन द स्टार्टअप फेज जहां पर उसके सीड बिजनेस होता है वहां रेवेन्यूज नहीं होते हैं, वहां उसका फोकस होता है सेल्स बढ़ाना। यहाँ इसका फोकस आपको इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाना या नेट प्रॉफिट दिखाना या पीबीटी दिखाना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। The focus is to increase the sales, which is number one, and the number two is start increasing their gross margins. This is the trend of the gross margins, which is increasing very rapidly. So to value this kind of a company, I use two kind of methods. One is your addressable market size, which I have picked up from the annual report. मैंने कोई Google search नहीं किया। Second method to value this company is price to sales. वो profits अभी है नहीं। Price to sales 3 times. Now what I can do is 3.5 times. What I can do is I can do two things over here. पहला price to sales को मार्जिन हटाओ, ये हटाओ, नहीं ये भी है ना, प्राइस टू सेल्स, ये प्राइस टू सेल्स को जाके देखते हैं कि हिस्टोरिकली दिस वाज एट हाई ऑफ 17 times, which was berserk. Today it is at a value of 4 times. So the price to sales have gone down. ये IPO आया था 17 times sales से, which was madness. इसका median is 8 times. Now it is on the lower end of the range. Median जो है 8.4 है, उससे भी लगभग ये आधा है. What are the other comparable businesses in this division? अगर मैं इन्फो एज का प्राइस टू सेल्स देखता हूँ, लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन नहीं है, दिस इज 27 टाइम्स. ठीक है. अगर मैं जस्ट डायल कर देखता हूँ, जो भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, दिस इज 6 टाइम्स. ओके. अगर मैं इंडिया मार्ट का देखता हूँ, विच इज 14 टाइम्स. अगर मैं जोमेटो का देखता हूँ, विच इज 13 टाइम्स.
So similar kind of businesses, my price to sales is at the lower end of the range because सर्किट लग रहे हैं, कार्नेज हो रहा है, नीचे जा रहा है, वो सब सारी बातें हैं. And the business is trying to expand the gross margins. So there are only two ways I can use to value these businesses. So आज की तारीख में market is saying that Paytm will lose 30% market share. आज की तारीख में हम यहाँ खड़े हैं. ऐसा होगा या नहीं होगा वो जजमेंट आपका है. Till a price of 360 rupees is maintained, we are standing in the 20% market share. जियो आके इसका मार्केट शेयर ले लेगा, लोग बाग पेटीएम का ऐप अनइंस्टॉल कर देंगे, फोन पे में चले जाएंगे, गूगल पे में चले जाएंगे. ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? In your friend circles, in people you know, people who are paying their utility bills on Paytm, नहीं or सर, नहीं or होता सर. or merchants or shopkeepers whom you are paying, because digital payments will pick up and digital payments is still very less penetrated in the country versus your cash payments. Do you really think we will go down by 30% market share? मार्केट तो अनलाइकली ये सर. बोल रहा है. No, sir. No, sir. See, I don't tell you. See, I give you no recommendation to go and buy Paytm or not to buy Paytm. ऐसा मेरा कुछ भी कहना नहीं है यहाँ पर. मेरा कोई recommendation नहीं है. सवाल आपके सामने है, मैंने सबको सिर्फ एक पिक्चर क्लियर करी है. Who says no sir and who says yes sir? Please एक बार दोबारा बोलेंगे. सर बीइंग एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ पेटीएम ऐसा नहीं हो I, सकता. इतना इजी नहीं है. I also say no, sir. It is not possible. तो फिर You should not. एक गेम खेलें. Who all are in the for the game? हाँ जी सर, बताइए. हाँ, बोलिए ना सर. एक काम करते हैं. Tomorrow let's everybody go and buy 10 shares of Paytm. 10 शेयर के अगर ओ बाय 1 शेयर ऑफ Paytm, नॉट बाय 10 शेयर्स. जीरो भी हो गया तो आपको कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं. हाँ या ना? ठीक है सर. हाँ जी सर. भाई जीरो भी हो गया तो आपको आपकी सेहत को कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं. नहीं सर. बट if this works around, you have a very good concept in your mind, which is going to stay with you for the rest of your life. सर सर मेरे सामने तो अभी आंखों के सामने आप सबके सामने अडानी का भी पूरा हुआ था, याद है ना. 60% लूज हुआ था, मार्केट खत्म हुआ था. अब देख लो डबल हो गया 6 महीने में. सारा फियास्को वहां पे तो क्रिएट हुआ ही था ना. वही तो बोल रहा हूँ ना. सी मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए. भाई 1 शेयर ना 400 रुपये, 300-400 रुपये खर्च करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा. आपको टेंशन भी नहीं आने वाली. गेटिंग माई पॉइंट? व्हाई आई एम टेलिंग यू टू डू दिस. यस सर. प्रोवाइडेड बिटवीन आवर 360 टू 360 टू प्रोवाइडेड 400 इट्स वैल्यू बाय लग रहा है. नहीं, फॉरगेट द बाइंग प्राइस और 360 टू 400. मैं तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके वो निकाल के दिया ये प्राइस. फॉरगेट द थिंग. प्रोवाइडेड द thesis is the thesis is that we are banking upon that Paytm cannot lose market share to this quantum. Boy, the color is white. Provided we are banking on this thesis. अगर आपको लगता है कि ये thesis सही है, he will lose market share, then तो don't do. But अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, then you have something to do. और कलर कैसे चेंज होगा इसका यार? नहीं भूल के कैसे होगा. आई थिंक ये रहा. ठीक है, हो गया. Can we do this? This is our thesis. I have just highlighted the thesis. This is our thesis. I hope आप सबको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. हाँ जी सर.
We are doing a real life example of a valuation which is in carnage of a startup business. ये चीज करने के बाद आपको स्टार्टअप्स और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई करने आते हैं और थोड़ा लेट स्टेज स्टार्टअप भी आपको आइडेंटिफाई करने आते हैं। ये चीज करने के बाद आपको एक स्टार्टअप कंपनी को वैल्यू करने में परेशानी आगे जाके नहीं होनी चाहिए। Any questions? So try it. Until and unless you don't try it, you're not going to get the hang of it. Try it. Buy one share or buy 5 shares, जैसा आपको ठीक लगे, और फिर डिस्कस करना कि क्या उसका आउटकम क्या निकला। मैंने एक्चुअली कल कॉल किया था, मतलब उनके कॉल सेंटर में, और उनको कहा कि मतलब फास्टैग बंद करना है, तो उसका तो उन्होंने बोला सर नो नीड टू वरी, यू कैन कंटिन्यू एंड आफ्टर 29th आल्सो इट विल वर्क, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन रेजोल्यूशन, वी विल गेट बैक टू यू। तो कुछ ना कुछ तो वो लोग ट्राई करते ही होंगे सर, और रिवाइव तो कंप्लायंस तो हो ही जाएंगे या एक्सटेंशन ले लेंगे। Let's see, sir. We are investors. We don't know. We act when we get the update. So this is the update. Let's see what happens. जी सर, जी सर।